Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, in this video we will start our new chapter which is cell cycle and cell division. So let's see what we are going to discuss in this chapter. If we talk about the cell division, you all know that life is started from a single cell. आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो लाइफ है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल एंड दिस सिंगल सेल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड इट मेक मेनी cells. This is a simple logic. You all know that a single cell, this single cell will grow, it will increase in the size, and then it will form two daughter cells. It will divide into the two daughter cells, which will be the same copy of this parent cell. And further, these two daughter cells will divide and they will form the four new daughter cells. So this process will remain continuous. ये process जो है वो continuously चलता रहता है. By this, the multicellular structure is formed. Single cell से life start हुई और एक multicellular structure form हो रही है by the process of cell division. But this cell division which is very important, इस cell division के साथ साथ सेल के अंदर सेल ग्रोथ भी करती है, सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है. तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सेल डिवीजन, बट एज वेल एज सेल डिवीजन, सेल also grow and DNA is also get replicated. All these events happens in a particular manner. ऐसा नहीं है कि कोई भी इवेंट ऐसे भी हो जाए, बट ऑल दीज इवेंट्स हैपेंस इन अ पर्टिकुलर मैनर. एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर ही सभी प्रोसेसेस होती हैं एंड दैट कंप्लीट प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज अ सेल साइकिल. सो बिफोर गोइंग ऑन टू द सेल डिवीजन, हम सेल डिवीजन के बारे में बात थोड़ा बाद में करेंगे. बिफोर गोइंग ऑन टू द सेल डिवीजन वी विल स्टार्ट विद द सेल साइकिल. पहले हम देखेंगे कि सेल साइकिल क्या है. एक्चुअल व्हाट इज सेल साइकिल? Cell cycle is the cyclic event by which the cell grow, it replicates its DNA, it make all other required things that is required for the cell division, and finally it get divide form two new cells. This complete cyclic events is known as cell cycle. So हम start कर रहे हैं cell cycle से. Cell cycle जो कि एक cyclic event होती है. अब सेल साइकिल है, दिस सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस. सेल साइकिल को टू फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है. This cell cycle is divided into two phases. The first phase of the cell cycle is known as interphase. The first phase of cell cycle is interphase, and second phase of the cell cycle is known as M-phase. So we can say that the cell cycle is divided basically into two phases. The first phase is interphase and second phase is M-phase. और द मीन्स डिवीजन फेज और माइटोटिक फेज, यहाँ पे डिवीजन होगा. दिस इंटरफेस इज, जो इंटरफेस की हम बात कर रहे हैं, दिस इंटरफेस वाज अर्लियर नॉन एज दैट दिस इज द रेस्टिंग फेज. पहले जब साइंटिस्ट सोचते थे कि ये इंटरफेस जो है ये एक ऐसी फेज है जिसमें सेल रेस्ट कर रही है, बट नाउ विद लोट्स ऑफ स्टडीज रिलेटेड विद द सेल्स वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इंटरफेस इज नॉट अ रेस्टिंग फेज. इट्स नॉट रेस्टिंग की मीन्स यहाँ पे सेल के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहे, बट इट्स अ वेरी एक्टिव स्टेज. ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है टू पार्टिसिपेट इनटू द डिवीजन फेज. सेल विल प्रिपेयर इटसेल्फ सो दैट इट कैन डिवाइड एंड इट कैन फॉर्म टू डॉटर सेल्स. So it's very active phase, and this active interphase is further divided into three subphases. इस interphase को हम आगे भी divide करेंगे, and these three phases of the interphase is, the first phase of interphase is known as G1 phase. The first subphase of interphase is G1 phase, or we can say that name is gap phase, और इसे हम बोल सकते हैं gap phase. Second phase of the interphase is S phase, or we can call it synthesis phase. Synthesis phase क्यों कहा है? Because the DNA is get synthesized in this phase. That's why it is known as synthesis phase. And the third subphase of the interphase is G2 phase, or we can call it gap 2 phase. इसे हम gap 2 phase भी बोल सकते हैं. So these are the subphases of the interphase. ये interphase की subphases हो गई, and after completing all these phases, the cell will enter into the next phase. This is M phase. फिर cell enter करेगी M phase के अंदर. This M phase is further divided into the two phases. इसे भी हम divide कर सकते हैं two phases के अंदर. The first subphase of M phase is karyokinesis. Karyokinesis, karyo word comes from the word karyon, means nucleus, and kinesis means division. So this is the phase in which nucleus gets divided.
So we can say in this the nucleus division take place. Nucleus division जो होगा वो होगा karyokinesis के अंदर. And the another phase of this M phase will be cytokinesis. Next phase जो होगी इसकी M phase की वो होगी cytokinesis, in which the cytoplasm get divided and it will finally form the two daughter cells. This karyokinesis phase will also divide into the some another sub phases. इसे भी हम आगे phases में divide कर सकते हैं. This nuclear division also not happens into means ऐसा नहीं है कि nuclear division जो वो एकदम से हो जाएगा, directly हो जाएगा. To understand it easily, we have divided these phases into sub phases. इस फेज को भी सब फेजेस में डिवाइड किया गया ताकि हम हर फेज के अकॉर्डिंग कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं वो आसानी से समझ सकें. सो सब फेजेस ऑफ दीज karyokinesis फेज विल बी प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, and the last one is telophase. Telophase. So these are the sub phases of karyokinesis. The karyokinesis happens by passing through all these phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. And after the completion of telophase, cytokinesis happens. In the cytokinesis, we can say that cytoplasm of the cell get divided. Cytoplasm का division होगा, and by the division of cytoplasm, two daughter cells will be formed. दो daughter cell जो है वो फॉर्म होगी, एंड these two daughter cells will be the exact copy of their parent cell, because और जो भी जितने भी जो चीजें जो organelles, the chromosome number जो parent cell के अंदर होगा, exact the same information is transferred into the daughter cell. So we can say that daughter cell which will form after this cytokinesis, they will be the exact copy of their parent cell. So here we have said that cell cycle is a cyclic event. तो इस cyclic event को एक बार हम एक cycle की फॉर्म में देखते हैं ड्रॉ करके कि कैसे cell cycle को हम cycle की इवेंट में cycle की फॉर्म में कैसे शो कर सकते हैं. How we can show this cell cycle into this cyclic manner. So we have to draw a circle so we can show all the cyclic events. This is a cycle. Okay. In this, only the small portion of this will be, this is the M phase. This phase is M phase. This phase of the cell cycle will be M phase, and rest all these part of the cell cycle will be denoted as the interphase. So इसे पूरा हम बोल सकते हैं that complete, यहाँ से लेके this complete part will be interphase. This is the interphase. Now this interphase, again we have divided that interphase is divided into sub phases. यहाँ पे interphase को भी sub phases में divide कर सकते हैं. So what are the sub phases of the interphase? This phase will be G1 phase or the gap 1 phase. This will be S phase, in which the DNA synthesis take place or DNA replication take place, and the third phase will be the G2 phase. ये हो जाएगी G2 और gap phase, and this small part will be the M phase, in which the actual cell division take place, in which the nucleus division and cytoplasm division take place. Okay, let's start. What happened? We can show these here also. So phases of this M phase. This is prophase, metaphase, anaphase, telophase, and finally this last one will be the cytokinesis. तो ये सब phases हमने यहाँ पे show कर दी हैं. These complete phases will denote the M phase. So by this cyclic event we can, इस cycle को draw करने से हम देख सकते हैं कि in a cell cycle, अगर हम पूरा cycle draw करके देख रहे हैं, we can see that in a cell cycle we have seen that M phase is a very short duration phase. M phase जो है वो बहुत छोटी ही टाइम की होती है, बहुत कम टाइम में कंप्लीट होने वाला फेज है. But all these phases, that as G1, S and G2, or we can say that interphase is a long time phase. ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेने वाली phase है. If we study about the human cells into a culture medium, then we can find that 24 hours will be taken by a cell to divide. 24 hours का एक टाइम जो होता है एक ह्यूमन सेल डिवाइड होने में लेती है, out of which that this M phase is happen only in a 1 hour. सिर्फ 1 घंटे के अंदर M phase कंप्लीट हो जाता है. Rest all time will be considered into the interphase. बाकी सारा टाइम जो सेल है वो इंटरफेज में बिताएगी. मीन्स क्या होगा, 1 घंटा in 1 hour cell will divide, and rest remaining time जो होगा इस टाइम के अंदर cell will prepare itself. Cell will grow,
cell will form the application of the DNA, या DNA की copies form होंगी, and all the proteins, all the required organelles, or everything get prepared, and then finally cell will again enter into the M phase. Cell फिर से M phase के अंदर enter करेगी अपनी सारी तैयारी करने के बाद. तो ये जो इंटरफेज है G1, S और G2, इन फेजेस के अंदर सेल अपने आप को तैयार करती है so that it can divide into the two daughter cells. तो पूरी तैयारी के बाद ही सेल एंटर करेगी into the M phase. So in the starting, if we draw here, we can show that at this level, at the G1, if we draw a cell, this is the single cell which is diploid in this nature. जो कि diploid है means we can say that it has 46 number of chromosomes. 46 number chromosomes यहाँ पे present है, and they are present in the pair. 23 chromosomes जो है वो pair में present है, 46 total chromosome हो गए हैं. The diploid cell present है, this cell is entering into the G1 में enter करेगी, then it will pass to the S, G2, and finally it will enter into the M phase. And after the end of this cytokinesis, ये जो cytokinesis होगा यहाँ पे M phase के एंटर में, जब cytokinesis complete हो जाएगा, at the end of the cytokinesis, here we can get the two daughter cell. यहाँ पे हमें two daughter cell मिलेंगे, and both of these two daughter cells will be diploid in nature. ये भी diploid ही होंगी, क्योंकि exact copy हम कह रहे हैं form हो रही है in the mitosis. So here the two daughter cell will be formed, which will be also diploid in nature. So this is about the cell cycle. In this cell cycle, we have studied that cell cycle is divided into two phases, interphase and M phase. Interphase is a long phase in which G1, S and G2 subphases are included. इस phase के अंदर cell अपने आप को prepare करती है, cell सभी तरीके की तैयारी करती है, and finally it enter into the M phase, which is the actual division phase. And in this phase, cells divide and it forms a two daughter cell. ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई है, आई होप. नाउ व्हाट वी विल गोइंग टू डिस्कस, अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. नाउ लेट्स सी, we are talking about interphase. That interphase is divided into three subphases, G1, S and G2. So let's see what happens, what changes or what special things happens during these subphases and during these subphases of interphase. अब हम एक एक करके one by one we will discuss about all the changes which are going in the cell during these subphases of the interphase. So we will start from the G1. हम G1 से start करते हैं, that what changes occurs in these cells during G1 phase.